Dear student, you have already read the first lesson of the history and you have already seen the videos. Now let us discuss question answer. Topic is what? The Indian national movement. Timeline is what? 1857 to 1917. There are 5 chapters given. First chapter is the First War of Independence. When it is happened? 1857. First question is, what was the nature of the revolt against the British before the First War of Independence? First War of Independence पहले revolt का nature क्या था? Before the First War of Independence, these rebellions were local, scattered and isolated. They did not pose a serious challenge to the British. Nonetheless, these revolts established a local tradition of struggle against the foreign rule. यहाँ पर कीवर्ड सब याद रखना है, जैसे वो लोग लोकल, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड थे. मीन्स वो लोग कम्युनिकेट दूसरे से नहीं कर पाते थे और वो लोग सीरियस चैलेंज नहीं ले पाते थे ब्रिटिशर्स का साथ. वो लोगों का इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था. Why was the War of 1857 held as the First War of Independence? क्यों 1857 को First War of Independence बोला जाता है? तो इसको First War of Independence इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी वर्ग का आदमी यहाँ पर शामिल हुए थे. The War of 1857 was held as the First War of Independence because this type of war was not happened before 1857. And all categories like peasants, soldiers, artisans, etc. joined in this revolution. Mention 2 political causes of the First War of Independence. यहाँ पर लिखा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, जैसे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन भी होगा, डिसरेस्पेक्ट सन टू बहादुर शाह भी होगा. Name 2 ways in which the British expanded their territorial power in India for doctrine of lapse or subsidiary alliance. ये दोनों थ्रू से वो लोग टेरिटरी को एक्सपांड कर रहे थे. What is the subsidiary alliance? Subsidiary alliance क्या है? Name 2 Indian states brought under the British control using subsidiary alliance. The subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley. लॉर्ड वेल्सले उसको इंट्रोड्यूस किए थे. अंडर दिस सिस्टम द इंडियन रूलर्स हु एग्रीड द सब्सिडरी अलायंस, जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते थे वो ब्रिटिश को एक्सेप्ट करेंगे एज द सुप्रीम पावर, सरेंडर देयर फॉरेन रिलेशंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एग्रीड दैट दे वुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस विद एनी अदर पावर एंड वुड नॉट वेज वॉर्स. वो लोग वार में शामिल हो नहीं सकेंगे. Accepted a British resident at their headquarters and agreed not to employ any European in their service without consulting the company. Other European भी थे, Dutch, France, ये सब को वो लोग अलाउ नहीं करेंगे. Agreed to maintain British troop at their own cost, और British troop को वो लोग अपना खर्चा से रखेंगे. और and Tanjore were accepted subsidiary alliance. ये दोनों को वो लोग सब्सिडरी अलायंस थ्रू से कैप्चर किए थे. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नेम द 2 स्टेट्स annexed by the British using the doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है और कौन कौन सा स्टेट इससे कैप्चर हुआ था? उसको लॉर्ड डेलहाउसी ने इंट्रोड्यूस किया था. लॉर्ड डेलहाउसी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, annexed many Indian states to the company using the doctrine of lapse. According to this doctrine, heirs adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler and not his territory, which would come under the company's rule. 17 जयपुर संबलपुर. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यही है, जो जिसका बेटा नहीं था वो अडॉप्टेड सन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसका टेरिटरी ट्रांसफर होगा ब्रिटिशर का पास.
The next question, who was Nana Sahib? What was main grievances against the British? नाना साहिब कौन थे, उसका ग्रीवेंस क्या था? नाना साहिब was the adopted son of Bajirao II. The British refused to grant Nana Sahib the pension they were paying to Bajirao. Bajirao II को जो पेंशन दे रहे थे उससे लोग इनकार कर दिए. Nana Sahib was forced to live at Kanpur, far away from his family seat at Pune. 8 number question, which policy was used by Lord Dalhousie against Rani Lakshmibai? Why did Rani Lakshmibai become a bitter enemy of the British? पता है रानी लक्ष्मीबाई झांसी को वो became the victim of the doctrine of lapse. Doctrine of lapse उसको लगाया गया था, became a bitter enemy of the British as her adopted son was not accepted as the heir to the throne. State 2 announcement which adversely affected the Mughal dynasty in India. In 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successors would not be allowed to use the imperial titles with their names and would be known as Mer Prince. This decision of the British hurt the feelings of the Muslims. Consequently, Zinat Mahal, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. Then next question, mention any two consequences of the annexation of Awadh. The dissolution of the court and the sacking of the army of Awadh left several nobles, officials and soldiers out of jobs. This increased वो unemployment increase किया and poverty in the state. The British took away lands from the talukdars. These talukdars became far opponent of the British. वो लोग British का against में चले गए. State any two consequence of the disbanding of the armies of the annexed state. The British, it leads thousands of people unemployed and increase the enmity against British. एक तरफ से 1000 आदमी unemployed हो गए और वो लोग Britishers का enemy बन गए. Give the meaning of the absentee sovereignty. Why was it resented by the Indians? Absentee sovereignty मतलब क्या है? Absentee sovereignty means that India was being ruled by the British government from England at a distance of thousands of miles. It was resented by the Indians. Mughals spent the revenue in India, but Britishers took away to their country. मुगल और ब्रिटिश का डिफरेंस क्या था? मुगल लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे और जो टैक्स मिलता था यहाँ पर ही वो लोग खर्चा करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ से टैक्स और सब ले जाते थे. What were the apprehensions of Indians about the introduction of the railways? The introduction of railways was perceived by the Orthodox Indians as a deliberate attempt by the British to defile their social customs and religion. The Orthodox Indians were aggrieved to learn that Brahmins and untouchables were to sit side by side in railway compartments. रेलवे का इंट्रोड्यूस होने से उन लोगों का जात ऊपर प्रभाव पड़ेगा और ब्राह्मण और दूसरा आदमी भी एक साथ बैठेंगे. यही उन लोगों का सोशल कस्टम को हैम्पर करेगा. यही सोच इंडियन का दिमाग में आया था. Mention any two social reforms advocated by the British which affected the religious tradition of the Indian people. क्या था? Abolition of sati and the introduction of widow remarriage. Mention any two measures which point to the policy of social discrimination followed by the British in India. The British officers were rude and arrogant towards the Indians. They dubbed the Muslims as cruel and unfaithful. वो लोग इंडियन लोग को थोड़ा नीचे देख रहे थे, इसीलिए इंडियन लोग उसका अगेंस्ट में जा रहे थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे थे.
Give two examples to show how the British exploited resource of India. Britishers took raw materials from India at cheap cost and sold their products at high cost. वो लोग रॉ मटेरियल्स हम लोग का देश से ले जा रहे थे जो कि बहुत चीप कॉस्ट में, और वो लोग यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट हाई कॉस्ट में बेच रहे थे, इसीलिए उसका मुनाफा ज़्यादा हो रहा था। ब्रिटिशर्स लोग वो मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन इंडिया का सब रॉ मटेरियल्स ड्रेन हो जा रहा था। Give any two grievances of the peasantry against the British. Peasantry farmers आदमी का क्या ग्रीवेंस था? लैंड टैक्सेस were raised. लैंड टैक्सेस को हाई कर दिया जाता था, जिसमें वो लोग दे नहीं रह पाते थे और उन लोग का जमीन चला जाता था। ब्रिटिश अगेन एंड अगेन द ब्रिटिश gave no respite to the farmers even during famines. famines में उन लोग को भी मदद नहीं मिलता था। What did the British do to reduce the landed aristocracy to poverty? The company increased land revenue. Not even a part of this revenue was spent on the development of agriculture or on the welfare of the cultivator. What was the provision of the General Service Enlistment Act which was resented the Indian soldiers? Why was it resented? Indian soldiers could be sent overseas on duty. The Brahmin soldiers saw in this danger to their caste. It was resented. Become Indian soldiers join in European army. Indian army basically ब्राह्मण लोग का ये धारणा था जो समुद्र पार होने से उन लोगों का जात चला जाएगा, इसीलिए वो लोग समुद्र पार होना नहीं चाहते थे, लेकिन यूरोपियन लोग उन लोगों को शामिल करने के लिए उन लोगों का देश को भेज रहे थे। Mention any two grievances harbored by the Indian soldiers which created an atmosphere favorable to the first war of independence. Indian soldiers were lower post while the Britishers were posted on high post. Indian soldiers were paid less salary in comparison with British soldiers. Indian soldiers को लोग बहुत कम पेमेंट करते थे, जो इंडियन सोल्जर्स लोग सोच रहे थे जो ब्रिटिशर्स लोग ज़्यादा पेमेंट पा रहे हैं और हम लोग कम, इसीलिए वो लोग अगेंस्ट में गए, वो लीड किया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल होने के लिए। स्टेट टू इफेक्ट्स ऑफ द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश in the first Afghan war and the Punjab war on the Indian soldiers. The defeat of the British in the first Afghan war and the Punjab war exposed their weakness to the Indian masses. It encouraged the Indian soldiers that it is possible to challenge and defeat the mighty British militarily. वो लोग जो अफगान और पंजाब में डिफीट हुए तो इंडियन लोग यही महसूस हुआ जो इंग्लैंड का आदमी अभी अपराजय नहीं है, उन लोग को भी पराजय किया जा सकता है, उन लोग का मनोबल थोड़ा ऊंचा हुआ। What was the immediate cause of first war of independence? Immediate cause क्या है? The most immediate cause of the revolt was the introduction of new Enfield rifles, the cartridges of which had greased paper covers. Before insertion of cartridges in the rifles, the soldiers were to remove the greased cartridges with their teeth. A rumor spreaded that the cartridges were greased with the fat of cows and pigs, which hurt the sentiments of Hindu and Muslim. जब एनफील्ड राइफल आया तब कैट्रिज जो बना था उसमें सुअर और गाय का चर्बी था, वो दोनों हिंदू और मुस्लिम रिलीजियन का अगेंस्ट में जा रहा था, इसीलिए उन लोग उसको पकड़ने के लिए मना कर रहे थे और ब्रिटिशर उसको मजबूर कर रहे थे, इसीलिए झगड़ा हुआ। Who was Mangal Pandey? What did he do? Mangal Pandey was a सिपाही at Barakpur. Barakpur का एक सिपाही थे। He refused to use
ग्रीस कैटरीज एंड ऑन बीइंग कंपेल्ड किल्ड टू ब्रिटिश अफसर, और दो ब्रिटिश अफसर को शट डाउन कर दिए। स्टेट टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कॉन्सिक्वेंस था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? It transferred the power to govern India from the East India Company to the British Crown and the rule of the British East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग करना खत्म हो गया और वो ट्रांसफर हो गया ब्रिटिश क्राउन को। हाउ वॉज द आर्मी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसका बाद आर्मी किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ? द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इंक्रीज। वो लोग सोचे हम लोग को खतरा पैदा करने वाला है, इसीलिए उन लोगों का ट्रूप बढ़ा दिए। यूरोपियन ट्रूप्स वेयर कैप्ड इनकी जियोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन, उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया। What impact did the uprising of 1857 have on Mughal rule and Peshwaship? With the death of Bahadur Shah II, who was deported to Yangon, the Mughal dynasty come to an end. Mughal dynasty खत्म हो गया। Nana Sahib, the last Peshwa, had taken an active part in the uprising and had fled to Nepal after the failure of the uprising. Mention any two drawbacks of the first war of independence. क्या drawbacks था? Lack of planning था, organization and leadership, lack of common cause. इससे 90 साल चला गया भारत को स्वाधीन होने के लिए, क्योंकि उसमें प्लानिंग का कमी था, लोग ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं कर पा रहे थे और सभी का एक कॉमन कॉज नहीं था। यही है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिस टॉपिक का। हमको उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कुछ प्रॉब्लम है यू राइट ऑन कमेंट बॉक्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Don't forget to press the bell icon to get earlier information. Thank you.